वेरी प्लीज कि हमारी जो 2 साल की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है, एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म एंड ग्रेटफुल। सच्चा प्यार के लिए प्यार ही काफी है। यू डोंट उसको मुकम्मल करना या उसको हासिल करने में नहीं है प्यार। जो भी गाने आ रहे हैं बहुत खूबसूरत है, एंड दे आर माय फेवरेट टू, और वो दुख भरे हैं। कहीं ना कहीं किसी ने छोड़ा है, बेवफाई की है, जो प्यार भी नहीं किए हैं, जो शायद अभी अभी 16 या 17 साल के, उनको भी बहुत मतलब फील होता है, और वो भी बोलते हैं कि यार मैंने भी बहुत, आई थिंक दे फीलिंग द सॉन्ग सो मच। मैं डांसिंग के लिए इतना नर्वस नहीं था, बिकॉज जब मेरी जर्नी चालू हुई थी एज अ डांसर, कोई मुझे देख नहीं रहा, मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो जो भी मैं गलतियां कर रहा था, किसी को दिख नहीं रहा था, और सिर्फ जो सक्सेस हुआ वो दिखा। वेट कर रहे हैं कि ये बंदा कभी अभी ना एक मिस्टेक करेगा। सो देयर इज दैट फियर। हम अपने आप को एक बॉक्स में डाल देते हैं, एंड समवेयर पीपल फील कि अच्छा आपने ये कहा मतलब इतना अच्छा है, डोंट गो बियॉन्ड। अपनी खुद की आवाज, खुद की जो आवाज है उसको कैसे फाइंड करना, दैट वाज द बिगेस्ट प्रोसेस। मैंने भी कई लोगों से प्यार किया है जहाँ पे वो मेरे औकात के बाहर थे, आउट ऑफ माय लीग। टेक लाइफ एक्सपीरियंस इन द एक्टिंग पर्सपेक्टिव, बट शक्ल का क्या कर सकते हैं। 5x was my size of my shirt. T-shirt be like 3x. Pants were loose, nothing fitting. Yeah. Okay, ill fitting clothes दिया है. Even the shorts I'm wearing is very मतलब एकदम सस्ता है. मैंने actually linking note से निकाला है वो shorts. If one man who has been captivating us and always stealing our hearts by his performance, चाहे वो खुद स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो या उनकी कोरियोग्राफी पे कोई परफॉर्म कर रहे हैं, वो विदाउट डाउट एस कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस है। अच्छा, टेरेंस अच्छे डांसर हैं, अच्छे कोरियोग्राफर हैं, रियलिटी शोज के बहुत ही कमाल के उत्कृष्ट जज हैं, ये हम सबको पता था, राइट? लेकिन अब हम सबको ये भी पता चल चुका है कि कितने अच्छे वो एक्टर हैं, कितने अच्छे वो सिंगर हैं, क्योंकि उनका डेब्यू गाना रिलीज हो चुका है शहदाई, which has stolen our hearts। तो बहुत सारी बातें टेरेंस से हम करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अतिथि देवो भव। सो टेरेंस, a warm welcome to you on our platform। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, अतिथि देवो भव। ये सही कहा है आपने, और सभी जो लिसनर्स हैं, सभी जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। Okay, Terence, you've always been loved and you've been giving love, फिर चाहे वो आपके डांस के जरिए हो, आपकी कोरियोग्राफी के जरिए हो, रियलिटी शोज में आपके कमाल के कमेंट्स के जरिए हो, but this is the first time where you're giving love as a singer, as an actor, और अभी रिलीज ही हुआ है गाना और कमाल के व्यूज उसे मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है। हाउ इज द फीलिंग? बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि आई एम अ डेब्यूटेंट। मैं आई एम नॉट एन एस्टैब्लिश्ड सिंगर। तो मुझे ये जो ऑर्गेनिक अक्रॉस प्लेटफॉर्म वी हैव टच्ड 5 मिलियन व्यूज इन द स्पैन ऑफ 48 आवर्स, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज कम सुपर प्रिपेयर्ड। यहाँ पर भी मैंने प्रिपरेशन की थी, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स। जो बड़े बड़े शागिर्द हैं, जो बड़े बड़े जो उस्ताद है, आई वुड से दे आल्सो लाइक दे गिव सो मेनी इयर्स फॉर दिस। सो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि जो मैंने 2 साल की मेहनत लगाई इस पे, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि लोगों को वो मेरा जो प्यार है, जो मेहनत है, वो पहुंचे। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपनाया है एज अ जज, एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, मैं यही चाहता था कि वो उसको पसंद करें। और जिस तरीके से वो व्यूज हमें मिल रहे हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से प्यार बरसा रहे हैं, आई एम सो हैप्पी दैट पीपल जेन्युइनली लव द सॉन्ग, बिकॉज़ द सॉन्ग इज बिगर देन एवरीबॉडी एल्स। गाना इतना प्यारा है, गाने की जो धुन है, जो अल्फाज है, वो इतने प्यारे हैं। राहुल जैन ने इसको कंपोज किया है, वंदना जी ने लिखा है, वंदना खेलवाल ने, और सौरभ प्रजापति जो डायरेक्टर है, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, ही हैज ब्यूटीफुली इसको डायरेक्ट किया है अलॉन्ग विद मारूफ तमाशिया, हु इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी प्लीज कि हमारी जो 2 साल की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है, एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म एंड ग्रेटफुल। ओके, एंड ऑल्सो पता है टेरेंस, मुझे इस गाने में अलग क्या लगा, बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ लव सॉन्ग्स जो आए हैं, लोगों ने पसंद किए हैं, बट द जॉनर वाज अ लिटिल टुवर्ड्स सैड एंडिंग, और इट वाज अ लिटिल ग्लूमी, बट दिस वन is a happy song, is a happy love हैप्पी song। सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, दैट्स हु आई एम, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट सच्चा प्यार के लिए प्यार ही काफी है। यू डोंट उसको मुकम्मल करना या उसको हासिल करने में नहीं है प्यार। वो अलग है, वो रिश्ता बन जाता है, वो सौदेबाजी बन जाती है, उसमें अपना स्वार्थ होता है। लेकिन जो सच मायनों में प्यार करते हैं, उनके लिए वो अंदर वो प्यार जगा,
वही काफी है, वही काफी है जीने के लिए। और करेक्ट। वही मिठास जो है वो इनफ, वो अच्छा, वो जिंदगी जीने के लिए काफी है। And I think that is the essence of pure love, true love. Shaidayee is means I'm crazy about you. I'm a fan of you. I am devoted to you, but in a very beautiful, positive way. ना ही कि वो एक पागलपंती बन जाए या आदत बन जाए या मजबूरी हाँ, बन जाए, ऑब्सेशन बन you जाए। know, या obsession नहीं बनना है। So it's एक दीवानगी, the hashtag is एक शैदाई एक दीवानगी ऐसी भी, because we wanted to show कि आजकल आपने बहुत सही फरमाया कि जो भी गाने आ रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं and they are my favorite too, और वो दुख भरे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने छोड़ा है, बेवफाई की है। हाँ। एंड आई थिंक जो लोग प्यार भी नहीं किए हैं, जो शायद अभी अभी 16 या 17 साल के, उनको भी बहुत मतलब फील होता है, और वो भी बोलते हैं कि यार मैंने भी बहुत, आई थिंक दे फीलिंग द सॉन्ग सो मच। बट आई फील देयर इज अ, हर एक प्यार में ना एक अलग पहलू है ऑल्सो। इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट बीइंग रियली सिंपल इन लाइफ। एंड आई थिंक ये सादगी जो है और ये सच्चाई जो है प्यार की, वो हमने कोशिश की है शदाई में दिखाने की। It is, and it has come out very beautifully. Not only are the lyrics good, it has been sung beautifully. The whole picturization is really, really nice, and it's a happy song. Left me with a very, very happy smile on my face. Yeah. But as you said, Terence, 2 साल से पूरी team इसके पीछे मेहनत कर रही थी. And of course, you're not an established singer. You are an established Yeah. choreographer that everybody knows. True. So ये जो transition था, because like a dancer, even today I'm sure आप रियाज करते हैं, it takes hours of Correct. practice to perfect Correct. something. Now opting for something जो आपका comfort zone है ही नहीं, so how much more had you to practice? मैं एक हर वक्त कहता हूँ कि जब मैं डांसिंग के लिए इतना नर्वस नहीं था, बिकॉज जब मेरी जर्नी चालू हुई एज अ डांसर, कोई मुझे देख नहीं रहा, मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो जो भी मैं गलतियां कर रहा था किसी को दिख नहीं रहा था, और सिर्फ जो सक्सेस हुआ वो दिखा। हाँ. बट कई सारे मैंने बहुत गलतियां की है, आई एम नॉट बीन परफेक्ट, बट किसी को दिखा नहीं, किसी ने कोई चटकारे नहीं लिए, किसी ने कोई कटाक्ष नहीं मारा। लेकिन जब यू आर एस्टैब्लिश्ड एंड व्हेन यू पीपल नो यू, certain doors are open to you. Maybe financially you may be also stable or whatever it is, and therefore you can afford, you're not desperate, but there is a certain sense of pressure कि लोग वेट कर रहे हैं कि ये बंदा बंदा या बंदी जो भी है कभी अभी ना एक मिस्टेक करेगी। सो देयर इज दैट फियर कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या लोग उसको पसंद करेंगे, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या मेरी आवाज लोगों तक पहुंच पाएगी, या गाना ना हिट होगा, या लोग पसंद करेंगे। There's a lot of fear, there's a lot of anxiety, there's a lot of performance pressure, because people have seen you in a certain way. Also हमारे हमारे I think with especially in our country, हम ये मानते हैं कि अगर एक बंदा एक चीज में सफल हो चुका है, इसका मतलब वही चीज करनी चाहिए और कुछ नहीं। And I feel that we are all, not just me, I feel हर इंसान, even the common man, I think we have been taught to think that only one thing you can be good at. I don't think so. We should not limit ourselves. हम अपने आप को एक बॉक्स में डाल देते हैं, and somewhere people feel कि अच्छा आपने ये कहा मतलब इतना अच्छा है, don't go beyond this. But I think we all, हम सब में बहुत कुछ है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं आई एम वेरी गुड एट इमिटेशन, बिकॉज दैट्स हाउ आई लर्न डांस। किसी ने सिखाया नहीं, देखकर सीख लेता था। इवन सिंगिंग फॉर मी वाज, आई कैन डू अ बाला सुब्रमण्यम G's voice any day, same to same. And that was the biggest flaw. They were like, listen, this is not a compliment. We need to find your voice. You can't be singing Shaidayee in Balasubramanian style. Then, why do we need, there is Balasubramanian already. We need to create your own voice. So, अपनी खुद की आवाज, खुद की जो आवाज है उसको कैसे find करना, that was the biggest process. क्योंकि हर बार मैं slowly बालासुब्रमण्यम जी की आवाज में suddenly चला जाता था। Because it was something that I used to love his songs. I was born in I grew up in the 90s, so वो गाने उनके बहुत famous थे. So it was very difficult for me to also leave that and start thinking कि मेरी आवाज क्या है. It's okay that you have been inspired by great singers, but now you need to find your own voice. तो इसकी तलाश में ही मैं बहुत महीने लग गए, and finally when I found my voice, I said, okay, I need to now not never, but don't try to copy anybody. Try to find yourself and then be the best version of yourself. And the best version is there, जो हमने अभी गाने में देखा. So जैसे यहाँ पर आपने कहा एक clean slate शुरू करी, not copying somebody but finding your voice. Also, Terence, you're somebody who can, by the grace of God, never look bad.
मतलब आपका जो फैशन सेंस है, और यू somebody वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जो जिनके लिए कहते हैं ना कुछ भी पहन ले कुछ भी, ही लुक्स गुड. नाउ फॉर दैट Yes. टेरेंस लुइस टू बिकम सोनू, Yeah. who is looking like a taxi driver, how, Yes. how challenging must have that been? It was very challenging for Saurabh Prajapati and Marut Masya, who's written the script, because they wrote the storyline. And they said, Terence, your image right now is like, you look a certain way and people perceive you in a certain way, but we do not want anything of Terence Lewis in Sonu. We want you to be underconfident. We want you to be a little shy. Ah, We want you to be. I said, they acting me, I will do it through my acting and through processing that inner Sonu. We all have the inner Sonu. We know where we have been underconfident. ये मेरे लाइफ में हुआ है कि मैंने भी कई लोगों से प्यार किया है जहाँ पे वो मेरे औकात के बाहर थे, आउट ऑफ माय लीग. So that's there. So you can take life experience in the acting perspective. But शक्ल का क्या कर सकते हैं? हेयर स्टाइल जो थी मेरी वो अलग थी. तो आई थिंक द फर्स्ट डे जब हम लोग शूट करे थे, मैं वैनिटी ऑलरेडी कॉस्ट्यूम ट्रायल्स तो हो चुके थे. मुझे सबसे गंदे कपड़े मुझे मिले. ओके मेरे बॉडी को मतलब नहीं आपकी बॉडी नहीं दिखनी चाहिए. पूरा फुल स्लीव्स पहनो और लूज 5x was my size of my shirt. T-shirt भी like 3x. Pants were loose, nothing fitting. yeah. Okay, ill fitting clothes दिया है. Even the shorts I'm wearing is very मतलब एकदम सस्ता है. हमने actually linking note से निकाला है वो shorts. So literally like the even the stylist worked on it very well. That was only the costume part. लेकिन जब मैं आया निकल के vanity van से और मैं shot के लिए चालू हो गया, first shot, cricket shot, playing cricket with the gully boys. मैंने एक shot दिया and immediately the director and the DOP came aside. Arko Dev was the director, DOP. He said, you know what? It's not working. मैंने कि शायद मेरे से कोई गलती होगी. Maybe I'm not doing the part correctly. I said, explain to me. I'm not understanding. Can I help? He says, no. You need to do something about the way you look. So it's like, what? What do you want me to do? He says, no. You're looking too good. You're not looking like Sonu. Like even though the clothes are all वैसा, गरीब, थोड़ा गंदा, मेला, they had put certain things to look it stained, and they had put sweat, water, and all that, so it not look sweaty. बट तुम्हारी जो बाल है ना वो मतलब कुछ बहुत ग्लैमरस लग रहे हैं. ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, जैसे है वैसे नहीं, बहुत ग्लैमरस लग रहे हैं. और बालों में थोड़ा कलर है ना, तो वो जो किया है वो हटाना पड़ेगा. ऐसा ओके कब, मतलब अभी ये शॉट के लिए? सर हाँ, it's our first shot. We are establishing you. We can't establish you as a good-looking boy. फिर वो class divide, वो औकात वाली बात नहीं होगी. If you are as good looking as a heroine, then you'll have a perfect match. We need to show that contrast. ऐसे ठीक है, क्या करना है? बाल कलर चेंज करना है. ऐसे ठीक है. So उसी टाइम पे 1 घंटे के अंदर शूटिंग रोक के हमने फिर we have gone to a chemist, brought some hair color, hair dye, turned my hair black, and then बालों की मतलब एकदम धज्जियां हो गई. Because it's not done, it was done just on the spot. Then they blow dried it or whatever, they dried the hair and they said अच्छा ठीक है, अभी इसको जितना गंदा बना सकते बना लो, मतलब sweaty. ऐसे ठीक है, वो भी हो गया. then they were not satisfied with the look. एक चेहरा थोड़ा मतलब बहुत मतलब we don't see the tiredness of a middle class person. and हालांकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, बिलोंग करता हूँ. but they said, no, you're not looking. So I said, what do we do now? So they said, okay, we will give you 3 shades darker makeup. I said, okay. They said, no, now we need to put some dark circles and we need to give you hot spots. Like, when you are, chawl ball. And I know that because, you get these hot spots everywhere. Skin is tanned in one place. So we literally did that kind of makeup. That's when we got then even I felt confident as Sonu, because I knew that this is Sonu. I'm really grateful for the entire team that came together, and I'm glad they stopped and made it look, because I really feel that there's a massive class difference between जब लड़की आती है गोल खोल के, wow, she's looking stunning. And it looks कि यार ये तो मतलब बेचारा चंगू मंगू जंगली लड़का और उसके वो मुंह खोल रहा है. She doesn't even know कि उसके चेहरे पे दिख रहा है कि उसने कोई ऐसा कोई like a superstar or fan देख लिया, like a star देख लिया. So that was very important. It was easy for me also to play the part, because when I see myself, मैं तो दिख नहीं रहा हूँ, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ. So it was good for me. I really enjoyed playing that part. Okay, ये एक aspect आपकी life का हमने देख लिया. But there's also a documentary that's been out. Terence Lewis, the Indian Man. Can you share something about that, please? Not many people know about it though.
वो भी एक मजेदार कहानी है निधि। एक्चुअली आई टीच इन यूरोप में, 15 साल से मैं यूरोप में द बिगेस्ट कंटेम्प्रेरी डांस फेस्टिवल में मैं सिखाता हूँ, आज भी जाके सिखाता हूँ। पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो जो फीलिंग है ना, बी अमंग्स ऑल द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स एंड द डांस कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, और वो एक जगह पे आते हैं, महीने एक महीने का वो फेस्टिवल होता है। उसके बाद मैं 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाता हूँ। आई टेक वन पार्ट ऑफ यूरोप एंड आई जस्ट ट्रैवल सोलो ट्रिप जाता हूँ। तो मैं एक एक टाइम पे मैंने 2017 में कॉर्सिका गया। कॉर्सिका इज एन आइलैंड ऑफ हम्म। फ्रांस। वहां पर मैंने एक रूम की बुकिंग की थी, लेकिन जब मैं गया वहां पर, मेरी रूम ऑलरेडी किसी को दे गई थी। और पूरे आइलैंड, छोटा आइलैंड है, कोई कोई होटल में रूम नहीं है। वो रिसेप्शन बोला कि भाई ये प्लीज सेव मी, प्लीज हेल्प मी, वेयर एम आई गोइंग विद माय बैग्स। He said, I don't know what to do with, I'm so sorry, there's only one option. I said, yeah, tell me. He says, हमारे होटल के पीछे ना एक कैंप साइट है, मतलब जंगल, उसमें आपको एक कैंप दिया जाएगा। आप अगर वहां पे रहना चाहते हैं तो हम सब कुछ आपको फ्री दे सकते हैं, हाँ। खाना वाना सब। I said, अभी beggars can't be choosers. So I said, ठीक है, give it to me, I'll take it, I don't have a choice now. So she said, but and then she was very sweet and she felt very like, I didn't shout at her, I didn't get angry at her. I just said, it's okay, you also relax. Even she was very hyper. I said, relax, it's okay, आपकी भी गलती नहीं है, हो जाता है। So then she was very sweet and she said, listen, I have my friends also who are staying. There's a waiter who works here, and he also is, staying in the campsite. तो जो जो काम करते हैं होटल में, वो कैंप साइट पे रहते हैं। ऐसे ठीक है, आई डोंट माइंड सम कंपनी। एंड वो 20 लोगों की झुंड थी। एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू देम, एंड वहां से 2 बंदे थे जो डायरेक्टर्स थे, और उनके साथ मेरा बातचीत होने लगा, एक लगाव होने लगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स लाइक फिल्म्स, एंड वी टॉक्ड अबाउट फिल्म्स, वी टॉक्ड अबाउट लाइफ। और वो 20 साल मेरे से छोटे थे, आई वाज 40, दे वर 20, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देन वी स्टार्टेड काइंड ऑफ हैंगिंग अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर मैंने बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया, come to India, because I had spoken so much about India and how India is so rich about its culture, how things change every 500 kilometers. So they were very fascinated. They were 20 years old. They don't know much. हाँ। Said, we'll come. Will you host us? I said, Aja. And I hosted them, and they loved India. They fell in love with India and Mumbai. They fell in love so much, and then they saw the contrast because they came for my shoots. They saw the fan following. They saw the madness. They saw how I could never walk on streets. This is so weird. We're walking with you, and there are people coming, and we can see everybody's eyes on you. This is crazy how India is and how people love you. I said, yeah, but I'm still a very small star, not a big star. You don't know how people go crazy with big stars. He said, no, but this is so fascinating. And then they saw another side of me in my house when I'm just being normal and talking very different stuff. And they said, we love the silences, you're lost in your space. And that's what I am. I'm in my house, I'm lost. I'm in my house, I'm very quiet, I'm very shy, I'm dreaming most of the times. They said, nobody knows that you're so deep in thought, and nobody knows that part of you. Everybody knows the glamorous, Hmm. the real, and at home I'm very, very quiet. So I said, we would love to, make a documentary on this aspect of you, because everybody can see the glamorous, the entertaining side of you. And, when we are on television, we entertain. We Correct. know that, of course, all of it is real, but a lot of things are for entertainment. If you do it for entertainment. So they loved all of that aspect, and they wanted to show India, which people have not seen through, my life and through what Hmm. I'm speaking. A very different approach, otherwise it's always, Asha, India means Bollywood or Garibi. So finally, I could somehow, and through their film, through their documentary, show a side to India and show a side to myself, which very few people know. It's going to come out on YouTube on 13th of April. So you can watch it. I want to warn you, it is super slow. It is not your tamasha, big things. It's very slow. It's very deep. It's very philosophical, and it's not for everybody. I mean, thought-provoking concepts to yourself and see how it can relate to you also, because I think there's a certain part of us that is forgetting how to just be still. And there's a very beautiful line that I always go with, that I am running to stand still. And I Wow. think every one of us is doing that in some capacity, because we are somehow missing the stillness in this life. So we're looking at that aspect. Wow, wow. And I think with that, Terence, you've also given a very good message also to people कि हम भाग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ठहरने की भी जरूरत है, so that whatever we are wanting to own and earn, उसको enjoy भी कर सके. So thank you so much Exactly. for your time, Terence, and I wish you all the luck
for more Shaidayee, for more of Sonu and other characters that you can bring to life by your acting, your singing, and of course your wonderful dancing. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you for your love. Thank you. Bye bye.